Hello, I think we can start now. Hello and welcome to Empowering the Truth, brought to you by the International Center for Journalists, or ICFJ. This is in partnership with us here at Boom Live. We are fact checkers based in South Asia, in India, Bangladesh, and Myanmar, and our website is boomlive.in. My name is HR Venkatesh, and I'm the Director of Training and Research here at Boom. And this is the second of our conversations, and I'm very, very excited to be bringing you two very special guests. The first is Meena Kotwal of the MOOC Nayak. I'll be doing a proper introduction in a moment. And the second is Sudipto Mondal of the News Minute. He's actually currently in a flight, and we're hoping that he's going to be joining us very soon. So that's coming up today. But as I said, this is part of Empowering the Truth. And so far, we've had one conversation already. That was last week, last Thursday, at exactly the same time. And including today, this is today's conversation. There are three more if you count today. So if you'd registered and attended last time's session, you'll remember that there is a chance to win a grant from ICFJ for your work. Last year, two newsrooms won the grant for the very same series. That was Factly and The Cube. So in order to qualify for the grant, you have to attend at least 3 out of 4 sessions this March. That happens every Thursday at 5 p.m. Indian Standard Time. This is our second session, as I said, which means if you're listening in today, you would need to attend at least 2 more sessions. If you'd attended the last session with Rajneel Kamath and are here today, then you will need to attend 1 more session. So counting last one today and 1 more session. So what's coming up next week? Exactly at the same time, at 5 p.m., we have Masato Kajimoto. He is Dr. Masato Kajimoto. He's a professor at Hong Kong University, and he is an expert in the field of media literacy and news literacy. And he's going to be talking about how we can get people's trust and how to not go about it. Okay, on to today's speaker on the topic of reaching the unreachable or reaching critical audiences. We're very, very happy to have Meena Kotwal, a founding member of the MOOC Nayak. It's a media venture based in New Delhi. Now, Meena has worked at several reputable media institutions, including BBC Hindi, and her work has been featured in Deutsche Welle, the New York Times, Le Figaro, and many, many more. Meena has also given talks at the University of Michigan, at Harvard University, and Columbia University. A recent survey report of Oxfam, in fact, said, and it was also a survey by News Laundry Media, it said that in the representation of tribals, Dalits, and OBCs, the MOOC Nayak is a media house that gives opportunities to journalists and writers from underprivileged sections of India. And according to this report, the MOOC Nayak's newsroom has the highest diversity in digital media. 54%, in fact, of the journalists in the newsroom are from Dalit and backward societies or oppressed societies. And as a journalist, Meena's work is grounded in lifting up these underrepresented communities, namely Dalits, backward classes, indigenous people, LGBTQ plus communities and minorities. Meena ji, thank you so much for joining us. Just a short note, Meena will speak for about 10 to 15 minutes in Hindi. And for those who do not understand Hindi, I will do a short summary afterwards. And then we will get into a Q&A, and then we will be joined by Sudipto Mondal, whose flight, I said, was rescheduled, and we're hoping that he will join us. On that note, Meena ji, बहुत बहुत धन्यवाद for joining us. आपके talk से पहले एक छोटी सी सवाल मैं भी पूछूंगा, which is हम लोग बूम में और इस सीरीज के में we are talking about misinformation or disinformation. मिसइंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन स्पॉट करने वाले काम करते हैं हम. क्या आपको लगता है कि आपके काम में भी ये मिसइंफॉर्मेशन चीज है, या वुड यू से कि आपके काम में मिसइंफॉर्मेशन नहीं पर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम है? थैंक यू वेंकटेश जी, आपने मुझे यहाँ बोलने के लिए बुलाया बूम लाइव, और आप पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम मिस इन्फॉर्मेशन की बात करें या डिसइन्फॉर्मेशन की बात करें, तो बिल्कुल अभी जो चल रहा है, हम लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी ट्रेंड है, और व्हाट्सएप पे जो खबर आती है या जो इन्फॉर्मेशन आती है, एक बहुत बड़ा तबका या एक बहुत बड़ा जो ऑडियंस है हमारे देश का, वो उस पर विश्वास करता है। उसको लगता है कि यही सच है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है तो झूठ तो नहीं होगा, ये तो सच ही होगा। लेकिन
हम जैसे लोग हैं, जो आप जैसे लोग हैं, वो जानते हैं कि कितनी मिस इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों तक पहुँच रही है। तो उसको काटने का काम या सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम हम लोग भी करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर, क्योंकि एक गलत प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक गलत इन्फॉर्मेशन चल रहा है और इसमें शामिल जो हैं, सिर्फ़ एक आम इंसान नहीं बल्कि बड़े-बड़े नेता भी शामिल हैं उसमें, जो मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं और उसपे जो है एक आम व्यक्ति उसपे बहुत आसानी से विश्वास कर लेता है। तो क्योंकि जिस तरह का हम लोग काम करते हैं, उस काम में ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बहुत छोटे-छोटे उदाहरण से दूँगी और कुछ ऐसे उदाहरण होंगे जो आप लोगों ने सुने भी होंगे। मैं खुद ग्राउंड पर जाती हूँ, तो मैंने अभी तो ख़ैर बहुत कम कर दिया ग्राउंड पर जाना, लेकिन जब मैं एक टाइम पे ग्राउंड पर जाती थी, तो बहुत सारी चीज़ें मिस इन्फॉर्मेशन रहती थी। तो उस मिस इन्फॉर्मेशन को जो हम लोग ग्राउंड पर जाकर पता कर सकते हैं, कई बार आपको न्यूज़ रूम में बैठकर नहीं पता चलती हैं। तो एक खबर मैं बताऊँगी आपको, जैसे एमपी में 2 बच्चों की हत्या कर दी गई थी और ये दोनों बुआ और भतीजे थे, उनकी हत्या कर दी गई थी एमपी में और वो सिर्फ़ इस वज़ह से क्योंकि उन्होंने खेत के किनारे जो है शौच किया था। वो टॉयलेट गए थे उधर और इस वज़ह से उनकी हत्या हो गई थी। दोनों ही बच्चे जो हैं दलित थे और उनकी हत्या जो है इवन ओबीसी जो था क्योंकि वो वहाँ पे ओबीसी बहुत ज़्यादा थे उस गाँव में और उन लोगों ने उनकी हत्या की थी क्योंकि उनके खेत के पास जो है उन्होंने शौच किया था। ये खबर सब जगह मीडिया में थी मतलब जितने भी मीडिया ने इसको कवर किया था इस खबर को, उसमें यही थी। लेकिन जब मैंने ग्राउंड पर गई तो ग्राउंड पर जाने के बाद थोड़ा-सा इसमें चेंज आ गया। हालाँकि शौच के लिए किसी को मारना ये बहुत बड़ा अपराध है अपने आप में। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला जब मैंने जो बच्ची थी उसके उनके भाई से और लड़के के पिता से बात की, तो पता चला कि लड़की के साथ वहाँ पर रेप करने की भी कोशिश की थी क्योंकि उसको मारने जब उसकी बॉडी मिली थी बच्ची की, तो उसका नाड़ा वग़ैरह सब खुला हुआ था। कपड़े भी इतर-बितर थे उसके और वो इन्फॉर्मेशन छिपाई जा रही थी, मीडिया से या बा क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड पर बहुत कम लोग गए थे। मुझे याद है एक और गई थी मेरे साथ जर्नलिस्ट मतलब वहीं जाकर मुझे मिली थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वहाँ मिली थी, तो वो चीज़ें बहुत बाद में पता चली कि किस तरह से वहाँ पे रेप करने की कोशिश की और इस वजह से वो जो उस बुआ के साथ जो भतीजा था उसने बचाने की कोशिश की और वो दोनों को ही मार दिया गया वहाँ पर। जबकि फैला ये कि टॉयलेट करने की वजह से उनको मारा गया था। तो इस तरह से फिर क्योंकि एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है और अगर आप एफआईआर में ना ये सारी धाराएँ नहीं लगाई जाती हैं, रेप से जुड़ी हुई, मारने से जुड़ी हुई, तो इस तरह ये धाराएँ नहीं लगाई जाती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन ग्राउंड पर जाने के बाद पता चली कि क्या-क्या चीज़ें थी वहाँ पर और किस तरह से वो एक अकेला दलित परिवार था, वो शमशान के बिल्कुल पास में रहता था और शमशान में उसकी बहन वो जो दोनों बच्चे थे उनकी बॉडी को जलाने भी नहीं दिया जाता। ये बहुत क्योंकि वहाँ पे हल्ला मच गया था तब बहुत मुश्किल से वहाँ पे उस जगह जलाने दिया था, वहाँ पर जाने भी नहीं दे रहे थे उनको। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकल के आई। ऐसे ही मैं आपको उदाहरण दूँ जैसे हाथरस का, हाथरस बहुत फ़ेमस है शायद एमपी वाला मामला आप लोगों ने नहीं सुना होगा लेकिन हाथरस वाला मामला आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। हाथरस में शुरू में कोई भी मीडिया उसको कवर नहीं कर रही थी। और क्योंकि मैं उस समय तो मूक नाइट नहीं शुरू हुआ था लेकिन मैं शुरू से उस केस से जुड़ी हुई थी। वहाँ के जो एक्टिविस्ट थे वो लगातार मुझे इन्फॉर्मेशन भेज रहे थे कि इस केस में ये हुआ, यहाँ पे ऐसे बच्ची का रेप हो गया है और उसके साथ ऐसे-ऐसे हो रहा है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझ तक आ रही थी। ना ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, ना ही कोई मीडिया इस खबर को उठाना चाह रहा था। कोई भी नहीं मतलब छोटे-छोटे जो चैनल थे वो अपने ही भरोसे चीज़ें उठा रहे थे। मैं दिल्ली में थी, कोविड का टाइम चल रहा था, आप लोगों को याद होगा। तो कोविड के टाइम पर वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बाद में गए थे। तो जब उसकी वो लड़की की मौत हो गई, दिल्ली में वो आई थी सफदरजंग उसके सफदरजंग यहाँ पे उसका इलाज चला था। उसकी फैमिली से मुलाकात हुई, मेरे पिता से और उनके भाई से मुलाकात हुई। तो उन्होंने बताया कि ना ही पुलिस में बॉडी मतलब बॉडी तो नहीं उस समय तो वो लड़की जो है लेटी हुई थी और वो उसके कपड़े इधर-उधर, इतर-बितर हो रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसको रेप की एफआईआर नहीं लिख रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि रेप हुआ ही नहीं है। और पूरा वो गाँव वो उनका घर भी एक दलितों का अकेला घर था, वहाँ पे ज़्यादातर अपर कास्ट रहते थे। तो
इस तरह से जो है इन्फॉर्मेशन छिपाई जाती है और इन्फॉर्मेशन छिपाना भी अपने आप में क्राइम है। वो मिस इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा बुरा है कि आप इन्फॉर्मेशन ही आप छिपा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जब क्योंकि ग्राउंड पर होने लगी फिर मीडिया यहाँ से जाने लगा और मीडिया ने फिर उस मामले को पूरा खराब करने की कोशिश की है कि भाभी जो है नक्सलवादी हैं या बहुत सारे उसमें एंगल जोड़ दिए गए। और राजस्थान का एक मामला आपको याद होगा जहाँ पर एक मटका छूने की वजह से एक छोटे बच्चे को मार दिया गया था, इंद्र मेघवाल नाम था उसका। इंद्र मेघवाल के साथ भी इसी तरह से हुआ था कि जब जो उसने पानी पिया उस घड़े से जो उनके टीचर का घड़ा था, उससे पानी पिया, उसको बच्चे को प्यास लगी और उस वजह से उस टीचर ने उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। और जब ये मीडिया में खबर पहुँची तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कह रहा है कि वहाँ पर घड़ा ही नहीं था। घड़ा रखने की जगह थी लेकिन घड़ा नहीं था। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मैं खुद राजस्थान फैमिली से आती हूँ। मुझे पता है कि राजस्थान में जगह-जगह प्याऊ लगे होते हैं। पानी पिलाया जाता है वहाँ पे। स्कूलों में भी आज भी चले जाइए वहाँ पे स्कूलों में टीचर्स के लिए अलग पानी की व्यवस्था होती है, स्टूडेंट्स के लिए अलग पानी की व्यवस्था होती है, तो वो भी था वहाँ पे। लेकिन किस तरह से इस इन्फॉर्मेशन को पूरा खराब कर दिया गया कि वो खबर नहीं आए बाहर। तो ये सब चीज़ें हैं कि कितना मुश्किल होता है आपको बैठकर छोटा-सा हमारा न्यूज़ रूम है, छोटा-सा उसमें अ, बहुत कम लोग हैं, लेकिन एक-एक इन्फॉर्मेशन को टैकल करना, उसको उसको बताना, प्रशासन से बात करना, उसकी जड़ तक पहुँचना कि इसमें क्या झूठ है, क्या सच है। क्योंकि एक तरफ जो एक बहुत बड़ा तबका है, इस तरह की खबरों को झूठा बताने में लगा है। और जो सच बताना चाहता है, उसपे भी अपने आप में एक तरह का थ्रेट होता है। आपने देखा होगा जिस तरह से ब्रॉडकास्टिंग बिल आ रहे हैं और नए-नए बिल आ रहे हैं, उसमें ये भी है कहा गया है कि आप कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला सकते। जबकि मिस इन्फॉर्मेशन कौन फैला रहा है? मिस इन्फॉर्मेशन का ही यही है कि आप सरकार के अगर अगेंस्ट जा रहे हैं और अगर सरकार को लगता है कि मुझे इस इन्फॉर्मेशन से खतरा है या मुझे इस वीडियो से या इस रिपोर्ट से खतरा है, तो सरकार कभी भी उस वीडियो को हटवा सकती है। आप अपने पास कोई डेटा नहीं रख सकते। एज़ अ जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि हमारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि आज हो सकता है उस रिपोर्ट पर चर्चा ना हो, लेकिन 6 महीने बाद, साल भर बाद हो सकता है उसी रिपोर्ट पर चर्चा हो। तो उस रिपोर्ट को गलत ठहराने के लिए सरकार के पास तो सारे सबूत हो जाएँगे अगर आपके पास वो डेटा नहीं रहेगा। तो आप डेटा भी रखेंगे तो भी आप इस बिल के दायरे में घिर जाएँगे और आपके ऊपर जो है केस हो सकता है। तो इस तरह की जब चीज़ें आएँगी तो बहुत मुश्किल है कि ऐसे में काम करना। बहुत मुश्किल है जो इन्फॉर्मेशन निकालना, बहुत मुश्किल है कि आपको पता है आप सही काम कर रहे हैं, सही ट्रैक पर है, लेकिन आपको जो है एक बहुत बड़ा तबका है जिसमें सरकार भी इन्वॉल्व हो सकती है, आस-पास के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। कई सारे ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जिनको लगता है कि सरकार ही सब सही है और हम जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। तो उसमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बूम लाइव जैसा तो नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम छोटे-छोटे अपने लेवल पे जितना हम लोग कर सकें, वो करते हैं। आप सवाल लेंगे या फिर ठीक है। लेट मी मीना जी, मैं दो तीन सवाल आपसे पूछूंगा, बट पहले मैं थोड़ा समराइज करूंगा जो आप कह रहे थे। मीना कोटवाल जी हैज in her opening remarks spoken about the challenges really of misinformation, which she categorizes more accurately as lack of information and sometimes deliberately obfuscated information. And she gave three examples, all from the field, reporting from the hinterland in India, from the states of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. And she also said sometimes hiding information is a much greater problem than sharing misinformation, and it is very close to that. There are shadings, of course, between misinformation and lack of information. Sometimes misinformation is lack of information. Sometimes it's separate. It all depends on the context. So these are the opening remarks. And now I will get into questions for Meena ji. It is also a reminder for you to start writing in your questions in the Q&A box. So if you have any questions, please put them in the Q&A box. And I will ask मीना जी these questions. पर पहले मीना जी अपनी तरफ से दो तीन सवाल पूछूंगा। आपने तो ओपनिंग रिमार्क्स करी है,
बट आई वांट टू गो स्पेसिफिकली सेक्शन बाय सेक्शन। पहले ऑडियंस के बारे में थोड़ा पूछताछ करूंगा, उसके बाद कंटेंट या जर्नलिज्म के बारे में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इम्पैक्ट इम्पैक्ट के बारे में, ये सब सवाल पूछूंगा। पहला सवाल ये है कि आपके अनुभव में हिंदी भाषी क्षेत्रों में उपेक्षित समुदायों के साथ जुड़ने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या है? आपके एक्सपीरियंस में मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज रियली फॉर एंगेजिंग विद अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज इन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स, वो क्या हो सकता है? देखिए अभी तो क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छी पकड़ हो गई है सोसाइटी में, हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए हैं। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है वो सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचती है। जैसे मैंने कहा व्हाट्सएप के ज़रिए पहुँचती है और सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचती है। और हम तक भी वो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के ज़रिए ही आती है क्योंकि जिस तरह की हम लोग खबर करते हैं, जिस तरह की हम हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, उनकी जो हम लोग खबर करते हैं, वो खबरें आपको मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेगी, वो खबरें आपको जो है न्यूज़पेपर खोलने पर नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो आपको एक छोटे से बॉक्स में साइड में कहीं मिलेगी अंदर के पेजेज़ में, जो खबर शायद एक एक मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए या बड़े-बड़े अखबारों के लिए वो खबर नहीं होगी। लेकिन वो हम जैसे लोगों के लिए वो बहुत बड़ी खबर होती है, तो फिर हम लोग उसमें जाते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरह से हमारे साथ आती है क्योंकि अभी क्या हो गया है कि आपको ज़रूरत नहीं है किसी का माइक आप तक पहुँचे। अभी आपके पास ऑलरेडी अपना माइक है। आप अपनी बात खुद से रख सकते हैं क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, फेसबुक बहुत ऐसा ऑडियंस है फेसबुक का जहाँ पे लोग स्क्रॉल करने ही आते हैं, देखना चाहते हैं कि किसी और की लाइफ में क्या चल रहा है। तो वहाँ पे आपको मिला-जुला सभी तरह का ऑडियंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ट्विटर की तरफ आएँगे तो ट्विटर पर इस तरह की उम्मीद रखी जाती है कि वहाँ का जो ऑडियंस है थोड़ा-सा समझदार होगा, जिसको हिंदी पढ़ने आती होगी कम से कम, थोड़ी-सी इंग्लिश पढ़ने भी आती होगी या थोड़ी कुछ मुद्दों की समझ होगी। भले ही वो किसी भी साइड हो, उसमें मेरी साइड हो या आपकी साइड हो वो अलग बात है, लेकिन वो जिस भी साइड है उसको मुद्दे की उस मुद्दे की समझ होगी थोड़ी बहुत। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं तो माइक की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको दर्द है, आपका हाथ कटा है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आप तुरंत जो है उसका वीडियो डाल बनाएँगे या फ़ोटो डाल सकते हैं या फिर आप उसको टेक्स्ट में भी बता सकते हैं कि मैं इस जगह रहता हूँ या मेरे साथ ये दिक्कत हुई है, प्रशासन इसमें साथ नहीं दे रहा है या सरकार इसमें साथ नहीं दे रहा है। तो अब आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आपके पास खुद ही अपना खुद का एक माइक है, आपके पास खुद का एक मीडियम है और उसके थ्रू आप ऑडियंस तक वो पहुँचा सकते हैं। तो ये बहुत एक तरह का एक आसान तरीका भी हो गया है। पहले जो है आपको अखबारों, टीवी के भरोसे बैठना पड़ता था कि वो लोग आएँ और आपकी प्रॉब्लम सुनें, तब जाके जो है सरकार सुनेगी। अभी ऐसा नहीं हो गया है। अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया हम लोग फ्रेंडली हो गए हैं, तो सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप तक खबर पहुँच रही है और वहाँ से भी हम तक खबर आ रही है। तो हम लोगों को इस तरह से खबर मिलती है। दूसरा उन तक पहुँचने का ज़रिया भी यही है। अगर मैं कहूँ कि अभी टेक्स्ट स्टोरी बहुत ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर का आप जानते हैं, जो रीडर है वो कम हुआ है। कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और टेक्स्ट स्टोरी में आपने देखा होगा कि जैसे इन शॉर्ट जैसे जो प्लेटफ़ॉर्म हो आ गए हैं, उनको सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ पे क्या हुआ, तो शॉर्ट-शॉर्ट में भी वो स्टोरीज़ पढ़ना चाहते हैं। तो वैसे आ गए लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी बहुत कम लोग पढ़ते हैं, उसका ऑडियंस और उसका रीडर जो है बहुत कम हो गया है अभी। हमारा जो काम है ज़्यादातर जो है ग्राउंड रिपोर्ट्स पे होता है, तो आप देखेंगे अगर हमारे यूट्यूब पे आप जाएँगे तो यूट्यूब पे आपको बहुत कम ऑडियंस मिलेगा हमारा क्योंकि वो ग्राउंड रिपोर्ट लंबी-लंबी ग्राउंड रिपोर्ट्स नहीं देखना चाहते हैं या इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाहते हैं। उनको यूट्यूब पे अभी उस तरह का ऑडियंस हो गया है, या तो वो गवर्नमेंट के प्रो हो गया है या अगेंस्ट हो गया है। और वो ऐसा ही चैनल जो है स्विच करके या उसी तरह की उसकी चॉइस हो गई है कि मुझे जो है मैं अभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट देखना चाहता हूँ, तो मैं उसी तरह के चैनल्स को सब्सक्राइब करूँगी। या मैं उनके प्रो में देखना चाहूँगी, मुझे लगता है कि अच्छा जो सरकार कर रही है वही सब कुछ अच्छा है और जो वो चैनल दिखा रहे हैं वैसे चैनल मैं सब्सक्राइब करूँगी और उन्हीं को देखना चाहूँगी। तो अभी न्यूज़ रूम की जो बहस है ज़्यादातर ऑडियंस उसकी तरफ है, ग्राउंड रिपोर्ट्स की तरफ नहीं है। तो इसीलिए वहाँ से कम हुआ है ऑडियंस, लेकिन वो शॉर्ट्स में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज़ है वो लेना चाहता है। तो आपने देखा होगा हर एक प्लेटफ़ॉर्म जो है शॉर्ट्स में लेकर आ गया है। यूट्यूब शॉर्ट्स लेकर आ गया है, इंस्टाग्राम रील लेकर आ गया है, फेसबुक पे भी आप देखिए छोटी-छोटी रील्स चलती हैं। तो 1-1 मिनट में उसको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए।
तो ऐसा ही आपको बनना पड़ेगा। अभी जो ऑडियंस चाहती है वो हमें करना पड़ेगा। पहले हम लोग जो चाहते थे वैसा ऑडियंस चलता था। लेकिन अभी ऑडियंस के चाहने पर हमें काम करना पड़ता है। तो हमें कोई कुछ स्टोरीज़ के एक्सप्लेनर करने होते हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो 1 मिनट में ही पहुँच जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे और सोशल मीडिया भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा उसको रीच दे रहा है। तो इस तरह का हम लोगों को काम करना पड़ेगा और यही एक तरीका है अभी तक कि कैसे उन तक पहुँचे। हालाँकि टीवी आज भी बहुत बड़ा ऑडियंस देखता है, जो गाँव देहात का जो व्यक्ति है, जो आम इंसान है, जो टीवी पे दिखाया जाता है उसको लगता है कि वही सच है। लेकिन अभी ये सच नहीं है। जो थोड़ा पढ़ लिख कर बाहर निकल रहे हैं, जो थोड़ा समझ रहे हैं मुद्दों को, वो इन सब चीज़ों से बाहर आ रहे हैं और वो इस जो टीवी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी झूठा उनको लग रहा है कि ये भी झूठा हो सकता है। गॉट इट। आपने तो एक सवाल का बहुत सारा जवाब दे दिया। सो आई एम गोइंग टू पिक कि एक चीज आपने बात करी है, रीचिंग द ऑडियंस, एंड just to summarize what Meena ji was saying, she was talking about how difficult it is to reach the audience and how audiences are splintered and they have to really go where the audiences are, whether it is YouTube or whether it is on Twitter, and how audiences are different on different platforms. Uh, तो दूसरा सवाल आपके लिए है मीना जी। देखिए ये योर टारगेट ऑडियंस, मैं मानता हूं, या जहां तक मेरा समझ है, योर ऑडियंस इज मेनली इन हिंदी स्पीकिंग एरियाज, एंड हिंदी स्पीकिंग एरियाज में बहुत सारे डायलेक्ट्स, रिच वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स है। तो हाउ डू यू टेलर योर कंटेंट, especially from the perspective of giving reliable information? क्या इसका, ये डाइवर्सिटी का आपके काम की पे पहुंच और प्रभाव पे असर पड़ता है पहले? बिल्कुल क्योंकि अभी जो हमारी टीम है वो भी हिंदी बेल्ट में ही है। तो एक तो लैंग्वेज का बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि साउथ की लैंग्वेज जो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इधर हिंदी बेल्ट का और नॉर्थ ईस्ट में भी आप चले जाइए तो थोड़ा-सा उधर का भी लैंग्वेज का समझने में दिक्कत हो जाती है। तो इसी वजह से हम लोग इंग्लिश लेकर आए अपनी वेबसाइट, हम लोगों ने इंग्लिश में भी काम शुरू किया ताकि एक ग्लोबल लैंग्वेज हो और जो हम लोग काम करते हैं, जिस तरह के मुद्दों पे हम लोग काम करते हैं, उसमें लैंग्वेज बैरियर ना पड़ने। कि नॉर्थ ईस्ट कह रहा है कि हम लोग हिंदी लिखना या बोलना नहीं जान रहे हैं या हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं या जो साउथ है उसके पास भी ये रहे कि हम लोग हिंदी लिखना बोलना नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज लेकर आए हम लोग और हमारी जो टीम है अभी तो ख़ैर हिंदी एरियाज़ में ही है वो एमपी, राजस्थान और यूपी, दिल्ली में है, 4 स्टेट में है। तो वहाँ की खबरें इसलिए हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर ज़्यादा भी दिखाई देती हैं। और इसके साथ ये भी सच है कि यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है जो अभी जो नॉर्थ में जो इन्फॉर्मेशन फैलती है वो तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से है और यहाँ पर एक पढ़ा-लिखा तबका भी बहुत कम है, अगर हम साउथ के कंपेयर करें तो। साउथ में आपको ज़्यादा लिटरेसी रेट मिल जाएगा, लेकिन अभी नॉर्थ में उस तरह का लिटरेसी रेट नहीं है। तो वो विश्वास वैसे ही करते हैं, जैसे मैंने बताया कि व्हाट्सएप पे बहुत जल्दी विश्वास विश्वास कर लेते हैं। तो हम लोगों को भी अपनी खबरें जो हैं व्हाट्सएप पर भेजनी होती हैं कि हम जो मेरा एक ग्रुप है जिन लोगों से मैं जुड़ी हूँ, तो उसको भी व्हाट्सएप पे के ज़रिए हम लोग भेजते हैं उसमें, कि किस तरह उन तक एक सही खबर पहुँचे, उन तक जो है एक इन्फॉर्मेशन ऐसी पहुँचे जो जिसमें गलती ना हो। अभी जैसे हमारी टीम के भी कई सारे लोग जो हैं, कई बार गलती से उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो पूरी तरह से सच नहीं होती है। तो उसको भी हम लोगों को देखना पड़ता है कि कैसे सही हो सकती है, कैसे नहीं, वहाँ प्रशासन से हमें बात करनी पड़ती है। कई बार विक्टिम से बात नहीं हो पाती है, कई बार कल्प्रिट से बात नहीं हो पाती, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग बायस ना रहें, हम सभी तरह के उसमें एंगल लेकर आएँ और सभी तरह के लोगों से बात करें। ताकि आपकी खबर जब जाए प्लेटफ़ॉर्म पर तो उसमें किसी को कोई ये ना दिखे कि वो बायस्ड है या किसी को ये ना दिखे कि ये एक तरफ़ा खबर है। तो इसी तरह की खबरें हम लोग लगातार करते हैं और चूँकि जिस तरह की हम लोग खबर भी कर रहे हैं, कास्ट पे अभी तक काम हुआ नहीं है और कास्ट पे काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, तो जैसे आपने ऑक्सफैम का भी अभी ज़िक्र किया था, तो ऑक्सफैम ने भी माना कि पहली बार जो ऐसा हुआ है कि
किसी न्यूज़ रूम में जो है डाइवर्सिटी मेंटेन की गई है। तो अभी हमारी न्यूज़ रूम में कोशिश है कि हम सभी तरह के लोगों को शामिल करें। तो अभी हैं भी हमारे साथ जैसे दलित, आदिवासी, ओबीसी हैं, मुस्लिम में भी पशमानदा मुस्लिम भी हैं हमारे साथ। क्वीर कम्युनिटी की है तो हॉरिज़ॉन्टल डाइवर्सिटी दिखाने की भी कोशिश करते हैं ताकि जो जिसका मुद्दा हो या जो जो जिस कम्युनिटी से है कम से कम वो अपनी बात रख सके। क्योंकि कोई एक जो है सबके बारे में नहीं जान सकता, जैसे मैं जो है सबके बारे में नहीं जान सकती। तो जो जिस कम्युनिटी का है कम से कम वो सब चीज़ें बताए उसमें और वो हम लोगों से भी गलती होती है तो वो उधर सुधारने का मौका मिलता है, उधर से हम लोग सुधार सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारी कोशिश रहती है और कास्ट पे काम क्योंकि नहीं है, तो हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है उसको वेरीफ़ाई करना। लेकिन फिर भी अभी तो थोड़ा-सा आदत हो गई है काम करते-करते तो पता है कब, कहाँ, कैसे, किसके पास जाना है। हाँ जी, जो आपने बोला है ये लॉट ऑफ थिंकिंग पॉइंट्स हमारे लिए. There are three questions that have come in. This is a reminder for everyone to put in more questions so that I can take them and I can divide up the questions accordingly and appropriately. मीना जी, मैं 2 मिनट एक सवाल ले लूंगा so that I can answer from Boom's perspective. So we have a question from Paul Osakyu. I hope I'm getting your second name right, Paul. So Paul asks, misinformation and disinformation are quite similar in a way. Do you think misinformation is a greater threat than disinformation? From your brief story, wrong information poses great threat than not knowing. Actually, this is a question, Paul, that we get very often. But the only difference to the question that you asked, and I'm glad you asked this question, is how does that, when you pit that against lack of information or wrong, how is it a greater problem? It's very difficult to compare an answer like this, but I will tell you that disinformation is much more potent sometimes than misinformation, whereas misinformation is more viral. What I mean by that is there might be a few bad actors who might knowingly create disinformation and spread it out. But the amplifying effects of volunteers, perhaps with initial bad actors and bad intentions, usually it reaches people, and that's where there's a tipping point, and we have lots and lots of people sharing this without the intention to directly, clearly spread disinformation. So I would say, in terms of volume, misinformation is a greater problem, but disinformation is extremely potent as well. And the thing is, when you're fact checkers or when you're journalists, you're not really thinking about the difference between misinformation and disinformation, because ultimately, when it comes to your phone, your device, or on your social media account, it affects people equally, whether it is disinformation or misinformation. So to an extent, I find this a useful exercise to think about disinformation and misinformation. But from Boom's perspective, we treat any viral misinformation or disinformation kind of equally, so long as it's dangerous and it is going viral and we are able to fact check it, right? So if you're able to satisfy these conditions, we generally fact check it, and we do not think and we do not label really as misinformation or disinformation. And your second part of the question was, wrong information poses great threat than not knowing. Yes, absolutely. Ignorance is bliss, but that is a separate, they say, but that comes from a different context. Wrong information and is infinitely more harmful, but everything again depends on the context. Context, it's the context that is going to dictate how harmful a piece of information is, whether it's wrongful information or misinformation. I hope we've been able to answer that question properly. मीना जी, आपके लिए सवाल तीथागुर से है. ये तो सवाल ये है, there is a probable urban fallacy that misinformation among underrepresented communities or rural communities is widespread, and those communities have no ability to tell whether कि ये सच है या झूठ. क्या आप मानते हैं कि ये सच्चाई है आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक?
थोड़ा आप बात कर पाएंगे इसके बारे में? बिल्कुल। किसने सवाल पूछा है, मैं नाम जान सकती हूँ? सवाल तीथा घोष से आया है। तीथा घोष। बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जिसके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच ही नहीं रही है, और वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो मिस इन्फॉर्मेशन तो तब होगा जब आपके पास इन्फॉर्मेशन कम से कम कुछ तो आ रही है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में गई थी बस्तर एरिया में, और वहाँ पर जिस तरह की हमारी सरकार जो है दावे करती है कि घर-घर बिजली पहुँच गई है, घर-घर राशन पहुँच गया है। तो मैं यहाँ पे 2 उदाहरण दूँगी बल्कि। मैं छत्तीसगढ़ गई, बस्तर गई, और बस्तर में जब मैं गई वहाँ पे आदिवासियों के बीच में, तो वहाँ पर बिल्कुल एक अलग ऐसी दुनिया थी, लग रहा था कि हम उस देश में नहीं रह रहे हैं जो 75 साल पहले आज़ाद हो चुका है। वो बिल्कुल अलग था, वहाँ पे बिजली नहीं थी, वहाँ पे पीने का पानी नहीं था, वहाँ पे स्कूल नहीं था। एक छोटा-सा स्वास्थ्य केंद्र बना था जो जिस पर भी ताला लगा हुआ था। तो वहाँ पे अगर बहुत इमरजेंसी होती है तो आपको कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है, तब जाके आप जो है डॉक्टर तक पहुँच सकते हैं। वहाँ पर कई तरह की ऐसी थी जो मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकती हूँ कि किस तरह के वहाँ पर महिलाओं किस तरह से रह रही हैं वहाँ पर। क्या हो रहा है उनके साथ। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो दिल्ली तक नहीं पहुँच रही है, और अगर पहुँच रही है तो उस पर बात नहीं हो रही है। और क्यों नहीं हो रही है आप जानते हैं, क्योंकि आदिवासियों को तो बिल्कुल इस तरह से इस देश में माना गया है कि वो कहीं पे हैं ही नहीं। आप देख सकते हैं किसी भी फ़ील्ड में नहीं है वो, ना मीडिया में है, ना वो एजुकेशन में है, ना वो न्यायालय में है, कहीं पर भी नहीं है। तो ना ही उनकी बात रखने वाला यहाँ पर कोई है, और ना ही वहाँ से वो खबर आ पा रही है। ऐसे ही मैं एक उदाहरण देती हूँ, अब बहुत छत्तीसगढ़ नहीं, बिल्कुल मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण अब दूँगी। बलिया का एक गाँव था जहाँ पर दलितों की आबादी बहुत ज़्यादा थी, मतलब सबसे ज़्यादा दलित ही रहते थे वहाँ पर, और ये हमारे यहाँ खबर हुई थी जब यूपी इलेक्शन था। यूपी इलेक्शन के दौरान हमारा रिपोर्टर वहाँ जाता है, सरकार कहती है कि घर-घर बिजली पहुँची, ठीक है? लेकिन वो उस गाँव में बिजली नहीं थी। पूरे गाँव में बिजली नहीं थी, उनकी पीढ़ी जो वहाँ पे गाँव में लोग रह रहे थे, वो उनकी पिछली पीढ़ी से बात की गई, उनकी पिछली जब लोगों से बात की गई, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे किसी ने बिजली ही नहीं देखी अभी तक घरों में। तो सोचिए वहाँ तक ये कैसे मिस इन्फॉर्मेशन हमारे खुद के नेता फैला रहे हैं, वो लोग फैला रहे हैं जिनके पास पूरी सत्ता है, जो कुछ कर सकते हैं। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन जब टीवी में ये दिखाई जाती होती है, तो सब लोग जान समझते हैं कि अरे! हमारा देश इतना अच्छा हो गया कि कहीं पे बिजली की दिक्कत नहीं है, कहीं पे शिक्षा की दिक्कत नहीं है, कहीं पे स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। क्यों ऐसा हुआ कि 75 साल होने के बाद भी वहाँ पर जो है बिजली नहीं पहुँची? हम लोगों ने खबर की, मूकनायक पर जब ये खबर हुई तो वहाँ पर जो बिजली विभाग है उसने सोशल मीडिया में नोटिस दिया कि 3 महीने के अंदर वहाँ बिजली पहुँच जाएगी। तो इस जी। तरह की चीज़ें हम लोग लगातार कर रहे हैं, और ये एक कम्युनिकेशन गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है। जिसके पास पावर है, उसके पास तो ठीक है। मैं यहाँ दिल्ली में बैठी हूँ, तो मैं प्रिविलेज हूँ यहाँ पर, मेरे पास सब कुछ है, बिजली है, इंटरनेट है, मेरे पास आना-जाना, स्वास्थ्य सब कुछ है मेरे पास। लेकिन मेरे जैसा हर कोई नहीं है इस देश का जो है। जैसे मैंने छत्तीसगढ़ का बताया, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं भी आना, आप सोचिए कितना बड़ा एक गैप हो गया। तो जब इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो वहाँ तक कैसे जो है सर्विस पहुँचेगी, वहाँ तक कैसे कुछ होगा? मीडिया जो है चुप रहता जी। है। मणिपुर में क्या हुआ? आप सबको पता है मणिपुर में कितना लेट वीडियो आया, जब वो जो नंगी महिलाएँ हैं एक एक भीड़ उनको लेकर जा रहा है, उनके साथ रेप होता है, उनको पूरा नंगा घुमाया जाता है। और मुझे यहाँ बोलने में शर्म नहीं आ रही, क्योंकि उनको करने में शर्म नहीं आ रही थी। और हम लोग उसको जी। जी। देख रहे थे, और इतना लेट वो इन्फॉर्मेशन आया। तो इसमें कुछ गुनहगार हम भी हैं कि हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, या वो इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं आ रही है। गॉट इट। Thank you for that question and answer, Meena ji, and thank you for the question. There are three, four other questions. Meena ji, I will also at this point in time take the time to introduce Sudipto Mondal, who is our other guest, and he is here. Sudipto, I'm going to toss it over to you in a moment. But just for those who
are not are new to Sudipto, let me do a quick introduction. He's a Bangalore-based investigative journalist who reports on caste, communalism, and corruption, and he's the executive editor at the News Minute. He's also a graduate of the Asian College of Journalism, and he was a former reporter with the Hindu and Hindustan Times and Dalit Camera. He's currently, um, traveling to Delhi, and that's why there was a delay in his flight, and he was not able to join earlier. But I'm very happy to say that he has joined us now. So, Dipto, do give us an indication if you're comfortable to join and start speaking right away. Otherwise, I can ask 2-3 questions that we have that have come in for Meena ji. Right. So as you can see, I'm still in the in the flight, and if you can buy me some time, I'm going to come and yes, we will buy you some say the time things that I because plan to say. I think it will be valuable to hear from you. Thank you so much. Stay with us, and I will ask a few questions to Meena ji, and we'll come back to you. Okay. Venkatesh, you're on mute. Yes, as I was saying, sometimes we have to make accommodations for things like flights, but journalists work through the clock, and we hope you'll bear with us for that. Meena ji, आपके लिए एक सवाल आया है from Ninglun Hangal, and she asks a very interesting question. She says, regarding hiding information, sometimes people, especially when it concerns things like rape, sexual violence, they tend to hide not just because कि ये forcibly hide किया है, but because they don't trust the media. क्या इसके बारे में थोड़ा मीडिया पर ही ट्रस्ट नहीं है क्योंकि उनको प्रशासन पर भी ट्रस्ट नहीं है एक तरह का। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह की आपने देखा जैसे हाथरस वाला मैंने उदाहरण दिया, तो ऐसा नहीं है हाथरस में जो वो फैमिली है वो पुलिस के पास नहीं गई थी, लेकिन एंड में क्या हुआ, उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। तो जहाँ पर जिसका ज्यादा रहता है, आप जानते हैं, तो दलितों का कई बार क्या होता है कि आप एनसीआरबी का डेटा ले लीजिए। एनसीआरबी का डेटा अगर हम लोग कहते हैं जैसे रेप होता है, तो लगभग जो है 80 महिलाओं का, 80 से 90 महिलाओं का डेली रेप होता है, जिसमें से लगभग 10 महिलाएं जो हैं दलित होती हैं। ये एनसीआरबी का डेटा कहता है जो रिकॉर्ड हुआ है। इसका बाद कई सारे ऐसा डेटा है जो रिकॉर्ड ही नहीं होता है। गाँव में जो है दलित आदिवासियों को भगाया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में मैं बता रही थी, मैं कह रही हूँ कि वहाँ की कई सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकती हूँ। वहाँ पे खुद महिलाओं ने मुझसे कहा कि हम लोगों के साथ रेप होता है। जब हम लोग जाते हैं पुलिस के पास तो वो बहुत हमें भगा देते हैं। कई बार अगर हम लोग ज़्यादा फ़ोर्स करते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो हमारी फैमिली को जो है जिसमें जो मेल होते हैं उसको कभी चोरी में, कभी किसी और इंसिडेंट में उनको फँसा दिया जाता है। जैसे आपने देखी होगी जय भीम मूवी, अगर देखी होगी, तो जय भीम मूवी में भी एक वो छोटा-सा हिस्सा दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से आदिवासियों को जो इस तरह के एरिया में रहते हैं, उनको किस तरह से फँसाया जाता है। तो वो प्रशासन पर भी विश्वास नहीं हो पाता कि अगर मैं जाऊँ, तो मेरे साथ क्या होगा? क्या मेरी एफआईआर लिखी जाएगी और लिखी जाएगी तो उस पे कितना काम होगा? मैं खुद अगर बताऊँ, मेरी 2 एफआईआर एससी-एसटी एक्ट में हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2 ढाई साल हो गए, मैंने इतनी मुश्किल से एफआईआर करवाई थी, जबकि मैं दिल्ली जैसे एरिया में रहती हूँ और वहाँ पर भी मैं एफआईआर नहीं करवा पाई थी। मुझे जो है सिर्फ़ एक छोटी-सी कंप्लेंट करके मुझे जो है भेज दिया गया। फिर जब मैंने ये मामला सोशल मीडिया पे उठाया, तब जाके यहाँ के जो डीसीपी हैं, उन्होंने मेरी एफआईआर लिखी। क्योंकि मेरी सोशल मीडिया पे एक बहुत अच्छी पहुँच है, लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, इसीलिए वो मामला डीसीपी तक पहुँचा। लेकिन सब मेरे तरह नहीं हैं। सब सोशल मीडिया की मदद नहीं ले सकते। तो सोचिए, सब कई लोगों को तो ऐसे ही भगा दिया जाता है कि उनके मामले लिखे ही नहीं जाते। तो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट भी है कि वो आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। सुदीप्तो हमारे साथ जुड़े हैं। सुदीप्तो की एक खबर मुझे याद है, जो इन्होंने एसीजी पे की थी कि वहाँ पर जो दलित स्टूडेंट हैं, वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी छिपा कर रहते हैं। ता क्योंकि उनके साथ उनको लगता है कि अगर हम अपनी आइडेंटिटी के साथ आएँगे तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा।
तो उनको छिपाकर वहाँ रहना पड़ता है। तो अब एसीजे जैसे इंस्टीट्यूट में ऐसा हो रहा है, दिल्ली जैसे जगह में जैसे उदाहरण बता रही हूँ, वहाँ ऐसा हो रहा है। तो एक ट्रस्ट भी है कि वो ट्रस्ट ही नहीं बन पाया। हम जिस एरा में रह रहे हैं, उस एरा में बहुत आसान होता है शहरों में कहना कि कास्टिज़्म नहीं है, अब जातियाँ काम नहीं करती, अब तो जातियाँ खत्म हो गई हैं। लेकिन ये इस तरह के जो इंसिडेंट है, वही बता सकते हैं कि कितना कास्टिज़्म है। और जो कह रहा है कि कास्टिज़्म नहीं है, जो जाति नहीं है, वो खुद अपने आप में प्रिविलेज है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि जाति की वजह से क्या हुआ। क्योंकि एक दलित को, एक आदिवासी को, जो इस सोसाइटी में रह रहा है, उसको बचपन से बताया गया है कि तुम दलित हो तो तुम ये नहीं कर सकते, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम ऐसे नहीं खड़े हो सकते, तुम बोल नहीं सकते। तो उसको तो बचपन से बताया जा रहा है, जिसको नहीं बताया जा रहा वो प्रिविलेज है। तो ये कम्युनिकेशन गैप है, ये इस तरह का जो एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट नहीं बन पा रहा। थैंक यू। अच्छी तरह से आपने समझाया इस इशू के बारे में। दो और सवाल है, एंड इनफैक्ट आई विल टेक हबीब रहमान's question. What do you think is the role of digital literacy and media literacy among, and what are the major challenges in reaching out to them with such initiatives, if there are any, in your experience? So this is an interesting question because for those of us who are in the business of countering misinformation and disinformation, we look at it as having essentially two problems. One is the supply of misinformation and disinformation, and the other is the demand for misinformation, disinformation. The demand usually comes from people who, like sharing misinformation, not because they have evil designs, but because it appeals to their insecurities, anxieties, fears, a sense of anger, victimhood, and so on. And so media literacy and digital literacy is aimed at this demand side, at people who want to share or who are helpless in sharing because it kind of weaponizes their feelings, and when your feelings are weaponized, you act out. That is a human tendency. So that really is why we have media literacy and digital literacy to a large extent, right? And it's different from fact checking in the sense that while both of them are countering misinformation, fact checking is really attacking the supply of misinformation. So that is the role really, and it's a massive, massive role. And the role is so important that this kind of teaching should be introduced in schools as early as possible, as early as primary school, because in primary school, you are taught that you should stay away from YouTube, for example, and devices. Increasingly, the world is giving children not play-based childhoods, but phone-based childhoods, in which they're basically being raised by the phone. Like we've had generations that were raised by television. Now we have children being raised by the phone. And so it is very, very important to reach them, not just in middle school or high school, but in primary school. The syllabus, is it catching up on time? No, it is not. So that it's extremely critical. And from there, it goes all the way across all ages, all the way up to senior citizens. Senior citizens also have to be told that what they read is not necessarily true and it has not been verified, it has not been vetted. And so it is a massive problem. And a major problem really is getting schools on board. And in order to get schools on board, you have to get governments on board, right? Because they'll put pressure. Then you have to get the bureaucracy on board. So the major challenge is getting it across the schools. The other major challenge, of course, is that media literacy. The way it's usually the domain of universities, but what we really need is a media literacy revolution where it becomes the domain of journalists. So journalists say that my job is not just to report the news, but also to kind of indicate how this news can be interpreted. So it becomes journalism plus media literacy and what we call media literacy journalism. So I hope that answered your question. I just want to do a quick check-in with Sudipto. Sudipto, is now a better time? Just give us an indication. Otherwise, I will go to the last question for Meena ji before coming to you. Yeah, can you give me let's say 5 minutes more? We've just gotten off the flight, and yeah. Yes, definitely. Meena ji, आपके लिए तो 4-5 सवाल आए हैं, and
दो सवाल और हैं, सो लेट मी आस्क दिस वन। सबीना रहमान आस्क्स कि आपने एग्जांपल तो दे दिया बस्तर के बारे में, वेयर यू नो देयर आर स्ट्रगल फॉर बेसिक्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, हेल्थ वगैरह। क्या आप कह सकते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, कीपिंग दैट इन माइंड, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कीपिंग दैट इन माइंड, क्या आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ओवरऑल पॉजिटिव है या ओवरऑल नेगेटिव है? इस दुनिया में कुछ भी टेक्नोलॉजी आती है तो पूरी तरह से नहीं कहा जाता है कि पॉजिटिव ही होगी, उसके कुछ नेगेटिव पार्ट होते हैं, कुछ कुछ पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव मैंने जैसे बताया कि अभी अब किसी को ज़रूरत नहीं कि किसी का माइक आपके पास आएगा तभी आप अपनी इन्फॉर्मेशन या अपने बारे में किसी को बता पाएँगे, आपके पास एक प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे आप बता सकते हैं। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे मैं खुद बताऊँ तो बहुत गालियाँ पड़ती हैं, जो आप काम करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं गालियाँ पड़ती हैं तो हम लोग अपना काम करना छोड़ देंगे। तो दोनों तरह से हैं, आप जानते हैं जैसे डिसइन्फॉर्मेशन जो है या मिस इन्फॉर्मेशन है, वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के ज़रिए ही फैलाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं फैलाई जा रही, लेकिन इसका तोड़ भी सोशल मीडिया ही निकाल रहा है। तो ये आपको देखना है कि आप कौन-सी साइड हैं, आपको कौन-सी इन्फॉर्मेशन पिक करनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बिखरी हुई है। आपको पिक करनी है, आपको कौन-सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या आप जो सिलेक्ट कर रही हैं इन्फॉर्मेशन वो सही है? ये आपको खुद से भी पूछना पड़ेगा। गूगल है, गूगल बाबा के पास सबका जवाब है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है या आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने कहीं और नहीं देखी या आपको कुछ भी लगता है तो आप गूगल से भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे 4 तरह के आपको पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत है। तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और जो टेक्नोलॉजी आती है जैसे अभी एआई आ रहा है, शुरू हो गया है एआई आना, उसमें बहुत सारा काम शुरू हो गया है। तो एआई ने बहुत सारा काम आसान भी करेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ भी खाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि एआई आना बंद हो जाएगा, वो आकर ही रहेगा। आपको आगे बढ़ना है टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ती ही रहेगी। तो जो उसका जो बुरा पार्ट है वो भी साथ-साथ बढ़ता रहेगा। तो एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, एक तरफ अच्छा है, एक तरफ बुरा है, तो वो सिक्का तो एक साथ ही बढ़ेगा आगे। इंडीड। और आखिरी सवाल है आपके लिए मीना जी, फ्रॉम एनोनिमस अटेंडी। एंड दिस एक्चुअली आपने सही जवाब पूछा है, बिकॉज मीना जी इज नॉट जस्ट एन एडिटर बट शी इज ऑल्सो अ फील्ड रिपोर्टर। तो ये सवाल है, समटाइम्स ऑफिशियल्स डू नॉट रिप्लाई when you are not from mainstream media, and likely is a journalist because they say they face such challenges. तो how do you overcome this? इसको कैसे challenge, कैसे आप negotiate करते हैं when officials जवाब ही नहीं देते हैं and they don't give you respect कि आप mainstream media से नहीं हो? बहुत बार ऐसा होता है कि जिस तरह का हम लोग मीडिया हाउस चला रहे हैं, उस पे लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जानने लगे हैं। तो जब नहीं देते हैं, जैसे मैं कुछ एग्ज़ाम्पल देती हूँ, यहाँ पे और भी सारे जर्नलिस्ट जुड़े होंगे, वेंकटेश जी हैं, दिव्या जी हैं, सब जानते होंगे। हम लोग एज़ अ जर्नलिस्ट अपना काम करते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी हम मैंने बताया, हम लोग अगर कोई खबर करते हैं, तो हम विक्टिम का पक्ष भी दिखाते हैं, हम कोशिश करते हैं कल्प्रिट वाला पार्ट भी दिखाएँ। क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि सबको कहने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो कितना भी गुनहगार हो। तो हमारी कोशिश रहती है कल्प्रिट या कल्प्रिट की फैमिली से उस तरफ का भी इन्फॉर्मेशन आ जाए। नहीं मिलता वो बात की बात है। तो सब तरह के प्रशासन से भी हम बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है हमारे लिए सब बिखरा हुआ है, अच्छा वो कहते हैं कि अरे आओ मीना जी और ये सारी इन्फॉर्मेशन ले लो, आप ही के लिए रखा है। ऐसा नहीं होता है, किसी भी जर्नलिस्ट के लिए ऐसा नहीं होता है। कई बार होता है, मान लीजिए प्रशासन ही कई बार बात नहीं करता। मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी की स्टोरी है और यूनिवर्सिटी वाले उस मामले पे बात ही नहीं करना चाहते। तो एज़ अ जर्नलिस्ट मैंने कोशिश की उनसे बात करने की। अब वो उनका मन है वो उस पर बात करें चाहे ना करें। तो हम लोग अपनी स्टोरी में लिख देते हैं कि हम लोगों ने तो इस यूनिवर्सिटी से बात करने की कोशिश की इस मामले पे। तो या अगर वो उस मामले पे बात नहीं करना चाहते तो भी हम लोग लिख देते हैं। अगर उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया या उनका मेल का या कोई मैसेज का, कॉल का रिप्लाई नहीं आया, तो भी हम लोग लिख देते हैं। क्योंकि हमें तो अपना काम करना है और वो
इन्फॉर्मेशन हमें आगे पहुंचानी भी है। अब सामने वाला बात नहीं करता है तो उसके लिए रुका नहीं जा सकता। ये बिल्कुल सही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को आज भी सब लोग जानते हैं, सब लोग पूछते हैं, कोई कितना भी बुराई कर ले, लेकिन जब जैसे ही मेन स्ट्रीम मीडिया का माइक आता है तो सबसे पहले उसी के पास दौड़ते हैं, हम जैसे लोगों के पास नहीं दौड़ते हैं। लेकिन फिर भी हम काम करना नहीं रुकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये अभी हमारी शुरुआत है। आज नहीं तो कल सामने वाले को समझ आ जाएगा कि जो खबर हम दिखा रहे हैं वही सही है। मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी बात कितनी सही पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। Very well explained, Meena ji. Thank you so much. Meena ji, I'm going to wait for some time to see if you want to say anything. But in the meantime, we have a poll for all of you attendees. We ask you these polls because it helps us really make the programming for you better. And it's very easy to take this poll. It's on your screen. All you have to do is rate this session on a scale of 1 and 5. And you have really 5 questions. And if you have something to say in 1 or 2 short sentences, it will be really helpful. So you can start taking the poll right now. मीना जी, कोई आखिरी एडवाइस या कोई कुछ सोच है आपके पास जो आप बांटना चाहते हैं? आप पूछेंगे तो मुझे समझ में आएगा, ऐसे तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि कोई बात नहीं, I will ask you when it comes. In the meantime, I'm just making sure that everyone is taking this poll. Sudipto, just checking again if you're able to. Yeah. I am now. Yeah, I'm just waiting for the Okay, baggage to come in, excellent. so I think I can Excellent. talk while I wait. So please, Yeah. those of you who are waiting, please excuse the fact that Sudipto is stuck at baggage claim and he can't very easily open his video camera. And we will ask him, oh, he has. So we can't see the terminal. Sudipto, we can't see you. There you are. Sudipto, There I am. Hi. You've been a thought leader in this space, much like Meena ji, and also going further back. And when we talk about misinformation and disinformation, and when we talk about that from the perspective of audiences we don't serve, or people whose quotes we don't take, or stories that we don't report, how do you kind of frame your experience, both in your current role and in your previous roles as a reporter? Right. To answer that, I really want to, like we were discussing in the lead up to this seminar, I want to get into this business of what is misinformation and how I see disinformation, and I must also admit that this is the first time I've actually engaged with the topic, because I mean, as everybody knows, I mean, since 2012, 10, 11, 12, those were the years when fake news started proliferating, and my response to that was that this is information that is being sent out for people who are hungry for this information. Like Meena ji was saying a little earlier, I suppose what she was trying to say is that there's a certain confirmation bias that fake news gives to people who are already of a certain political slant, and they want information, whether it's true or false, to back their claims. So that's perhaps why I've never really engaged with the question of fake news or disinformation or misinformation. And it is, for the first time when I just sat down with Venkatesh, that I said, okay, man, what's the meaning of misinformation and how is it different from disinformation? So he said, misinformation is inadvertent and disinformation is deliberate, right? And okay, so I thought let's pick on that a little bit and look at what is misinformation, right? What's inadvertent, right? Inadvertently, there is so much, just like how Meena was giving examples, there is so much that is just out of the sights of Indian journalism, and senior journalists in India just don't look at certain issues, and what happens as a result of that, or more, so sometimes there are incidents which suddenly blow up and they land up over there without a clue about what's happening, and they manage to report only some part of it, right? So therefore, the question arises as to, the information that finally reaches the reader or the viewer, is that information enough?
right? I want to give an example to kind of give you a sense of where I'm going. So there was this report a few years ago which said that Dalits have been attacked by Vokkaligas in a village around 70, 80, 100 kilometers from Bangalore. So obviously, because I was a crime reporter, I looked it up and I tried to follow up, saying where who were the attackers, who were the victims. And when I called the police station, and this was I was in Hindustan Times, in a bigger, in a newspaper which has only a state correspondent, you build your stories off of stories that have already appeared in the local press. So there was a small little report saying there was a caste riot, and so I was following it up. 2 days, 3 days later, I finally get the FIR copy because the cops were not happy to share it. And there I discovered that the victims are also some Michael Peter something, and the attackers are also some Michael Peter something. And that is when I discovered that this village, which was just outside Bangalore, has been a Catholic village for 300 years. And in all these 300 years, the people of this village have continued to hold on to their original caste locations, right? And the Vokkaliga Christians continue to treat the Dalit Christians as untouchable. There is segregation in the village. There are different cemeteries in the village. In the school that the church runs in the village, there is segregation over there. When there's a St. Mary's feast, there is segregation over there. So basically, what I'm saying is that I got a lot of information on how caste is practiced among Christians and within the Catholic order. Now, coming back to this question of misinformation, right? Now, the reporter just picked up on one fact, which is Dalits were attacked and they were thrown out of the village and their houses were looted. Right now, all this information was left out of it, right? And I would say that is also misinformation, right? I mean, it is because of the incompetence or the blindness or the laziness of the reporter that this entire thing got left out. And I can go on giving you many examples. The Rohit Vemula case, for example, right? I landed up over there, and the only focus of the reporting was on what was happening in the campus, or which celebrity politician was landing up in the campus to extend solidarity. I just had to go a little further, go back to his village in Guntur, and then the whole story comes through. So, what we count as misinformation, I think this leaving out of details, being blind to certain angles is something that contributes to misinformation. Now, disinformation, right? The other thing, which is the deliberate part. And over there, I want to, there are many examples that can be given, but I want to choose a slightly provocative example. We all know that before these right-wing loonies who are on mainstream television channels and all that, a large part of Indian media used to be left-leaning, socialist, the good reporters, the bright reporters or the celebrity reporters back in the day were slightly left. Some were communist also. Now, I don't want to take names, but I want to refer to a person who kind of was always highlighting the issues of farmers, right? And for me, that is a great example of disinformation, saying that farmers are committing suicide, others, farmers, because anybody who's ever, visited a village, looked at the farm sector, will find it difficult to identify who the farmer is, right? The person who is committing suicide is most often not the person who's actually tilling the land, right? The owner of the land. There are so many ways in which the category of farmer, is problematic, because in the end of the day, are you talking about the landlord? Are you talking about the landless worker? Are you talking about the unacknowledged woman in that household who contributes a lot but doesn't get acknowledged? Right now, this for me is disinformation, because these are not people who are, number one, right-wing loonies. Number two, they are people from whom you expect better. You expect them to analyze to Indian society better, to come up with better theoretical frameworks, to look at farmers or whichever other category you might come up with. So and now the thing is, when you may ask, so okay, what's the big difference? Farmer, why are you going after that? Because if I did a bit of reporting on farm suicides in Mandya and Anekal, Tumkur, outside Bangalore. And I've discovered that suicides are also linked to caste and caste pride.
the landlord, the landed intermediary caste Gowda, who at one level influences politics in the state, does get humiliated, and he feels like his stature has been diminished to some extent when a moneylender comes outside his house and demands that he repay. Right? This is the Ur Gowda. This is the feudal lord of that place. So so many of these suicides were actually a result of somebody's pride being affected. I am not saying for a second that in this there is no opportunity for a critique of neoliberal politics, policies, and all of that. But nevertheless, this flat framing of farmer as a category does not kind of really help us understand rural society. It might be helpful to kind of take on the IMF and the World Bank and all of those things, but it doesn't acknowledge the fact that in addition to being a person in financial distress, this person is also a local hegemon, that this person is also not the most efficient producer, right? There are so many things, derivatives you can get from just that slight change in perspective. And that's why I say that, it's a little bit of disinformation, it's a little mischievous, it's a little deliberate to just come up with a flat category called farmer, Indeed. And and the third thing, more than disinformation and misinformation, I want to look at missing information, right? Because of how, like Meena was talking earlier, I'm sure she talked about the identity of most journalists in the mainstream media, right? And their identity, like I was just saying even before this, prevents them from seeing certain realities, and that leads to large gaps in information. It leads to missing information. In fact, people talk about journalism in the colonies, in the former colonies, as post-colonial, in its approach, that there is this, all these countries which were once colonies of, Western empires, there, journalism acts as a vehicle for post-colonial discourse. Now, for me, that post-colonial as a concept itself is problematic, because post-colonial rulers are the rulers who the colonists displaced in the first place. They came back to power when the colonists left, right? So their narratives have to be taken with a pinch of salt. And, you cannot ignore the fact that when, say, for example, the British left India, the erstwhile rulers came back in a new form, right? Got into politics, and the ruling class came back in force, right? Now, narratives which emerge from that class, can it be taken seriously? When I would rather see what I suppose people like Meena and so many others in the anti-caste space, even women journalists who in the last 20, 25, 30 years have emerged in a very strong way in Indian media, what they are doing is for me far more interesting, because it is post-colonial writing, where you're not just looking at those established patterns of inequality. You're looking at something deeper, you're looking at something structural, right? Like Meena's reporting shows that the British were not necessarily the only villains in India, right? That we still have these people, and these people have been there for longer. They will be there for, they were there before the British came. They're going to be there for much longer after we are gone as well. This is the hegemonic structure of the country. So for me, this post-colonial is very exciting also, and that's, I suppose, where we are supposed to head. So missing information can be addressed through post-colonial approach. Yeah. Right. So these are some provocations if you want to discuss. Yeah. Provocations. Yes. At this stage, I'm going to respond to your thoughts on the three areas that you outlined, Sudipto. But I just want people to start asking questions, and also a reminder that we will wrap this up in about 20 minutes. Start wrapping it up in 20 minutes. And I urge you to ask questions, because it is a very rare occasion when you find two such journalists coming together on the same platform and speaking about specifically misinformation and disinformation, and forcing us to expand our understanding of the phenomenon. And one thing, of course, for me, what you said echoed is, of course, we think there is a tendency in the fact-checking space to think of misinformation in very siloed categories. But of course, these are very leaky boundaries.
when we fact checkers refer to misinformation, we talk about the stuff that require social verification, or where we use tools to verify the stuff that comes to us on WhatsApp. But of course, as you pointed out, Sudipto, it's a leaky category, and from a demand side perspective, from the perspective of the Aam Aadmi or Aam Aurat or Aam non-binary person, it looks completely different. And you're right, missing information and this misinformation, disinformation, the way you defined it, it completely makes sense. So I have a question for you, which you could say is, we've spoken about what, when you look at news from the perspective of mis and disinformation, but is there any noise that comes in the way when it kind of comes to you reaching people who are underserved? Or when I say noise, I don't just mean for you specifically, but from the media's perspective. When it comes to reaching people, yes, we are not reporting stories of people who are oppressed, and we are not quoting from the right sources. We go to the same sources again and again. We go to the same spokespersons again and again. So we don't have diversity of sources, and we don't have diversity of news reporters. But is there an issue when it comes to actually reaching these people, so that you reach these critical audiences? Yeah, And no, this is a good before question. Sudipto says anything, it's a reminder for you to send in your questions, please. Yeah, no, I just want to go to an example from the US, right? So in 1972, 73, the American Society of Newspaper Editors passed this resolution, this charter for diversity, saying that we will promote the inclusion of racial minorities and, in proportion to their population. Now, this did not come out of some love and fresh air, I suppose, firstly, of course, those who know about this particular episode in US history will know that there was a Kerner Commission. The Kerner Commission, talked about why the race riots happened, because just in the years, the 60s were the time of the civil rights in the US. Now, the need arose from the fact that the black neighborhoods of that time were bursting with political activity. There were people on the streets. There were leaders, at the block level who were able to mobilize and take on local police stations. There was this term which is used to describe that time, which is called the Bronx is burning. Right now, when the Bronx was burning, they discovered that they couldn't just send a good boy white reporter to that neighborhood, and expect the black population over there to just speak to them saying, well, yeah, welcome reporter, here are the details, this is what happened to us. Because they realized that the residents of the Bronx were very hostile to a visit by a white, most often male in those days, reporter. And that's when, the need of the market, the need to just get to these stories, because these are huge stories at that time, right? Forced people to look at hiring reporters from non-white backgrounds, right? Now, for me, that moment was the Rohit Vemula movement in India, when something similar happened over here, right? Like, because I remember I landed up at the HCU campus, and these students were going Jai Bhim, Jai Bhim. And a very famous reporter, she'll be very embarrassed today if I name her, came up to me very sincerely, asked, Acha, what is this Jai Bhim, Jai Bhim? Is it like, I thought they were left wing, by the way, her ignorance, is immeasurable. But anyway, she said, I thought they were left-wing students, and why are they going on about Bhim and all of that? And she probably thought it's some Bhim from the Mahabharata, Chota Bhim or something like that. That was the level of their ignorance as recently as 2016. Today, these kind of conferences are the order of the day. These are discussions that are happening almost every second day, on diversity, on caste and things like that. But even as recently as in 2016, when like in India, the Bronx was burning, right? When Dalits across the country. So Rohit Vemula happens, then Una happens, then in Bombay there's this huge protest that breaks out over the demolition of the Ambedkar Bhavan over there. So in different parts of the country there is this Dalit uprising, and the Savarna Brahmin reporters of Indian media just didn't know what hit them. They landed up over there, and people were saying things which these people were not able to understand. And then suddenly, I started getting calls from
across the country saying, hey, what does this mean? Can you give me some reference material from Ambedkar's writings, which I can read to understand what is happening in Una? I mean, speaking of Brahmins, let's use a Sanskrit line. It's called Yuddha Kale Shastra Abhyasa, right? So that is what, started happening in India. And I dare say it is happening to this day, because a lot of people have realized that caste is the sexy story, right? That is the story that is getting people awards, right? That is what is getting people fellowships, right? So non-Dalits will come and do something on diversity and land up in some foreign university on a fellowship, right? So there's a lot of appropriation also happening, right? At a time when people should at least now, like in the US, when they passed that charter, like Indian editors could wake up and say, hey, let's pass one charter, let's pass, sign a resolution saying we will have more Dalits, Adivasis in newsrooms, but no, Indians are a little more clever and a little less civilized than Americans, in this regard, when it comes to civil rights and things like that. So they gamed the system and they said, hey, why not? Our reporters are smart enough, we'll teach them how to do caste reporting, right? Let's get a few, Dalit scholars from somewhere and teach our Brahmin reporters how to do caste reporting. So this is how things have happened since 2016. Does that answer your question? I don't know. Yes, of course it does. But it also gives us more room for, more thought. So what I do is I've got a question via WhatsApp. And the question is, would you say misinformation and disinformation is equally an issue with online media and independent media in comparison to print media and TV media? And feel free to talk about it from your perspective or from your framing of misinformation, disinformation. Yeah, if you are, exactly. So if you're framing misinformation, disinformation as that thing which was started by the BJP and the Hindutva forces in around, during 2010, 11, 12, then you can say that, yes, the online world has really been, I mean, a lot of online outlets and, a lot of this was spread online, and newspapers in that sense didn't put out stories, that many stories, which were fake, and there is a, But if you look at misinformation, disinformation from that perspective, which I was urging you to look at when I made my initial submissions, right? The newspapers have a lot of misinformation in terms of like this, right? They don't have the full information. Harobele, a caste riot happens. Their information was Dalits were beaten, atrocity case registered in dash police station. By the way, that atrocity case is also overturned because they were Christians. Okay, never mind. But the point is that is as far as they go, right? So there is huge, acres of material which is left out. So, and that is because of ignorance. So I'll put that in the misinformation category. But disinformation, too, wow. I mean, like, you can write entire books on that, because there are editors sitting in newspapers who are asking their reporters who want to do really meaningful stories, saying, who will read this and who will read that? Why is this required and why is that required? Right? And what happens as a result of that is that it is a deliberate way to allow either information to come in some mangled way, right? In a way which is palatable to that publication's owners, right? Or, like I said, it becomes missing information. That information never comes only. And both of those things are deliberate. So missing information and disinformation are not things which are seen from this perspective, something which is just endemic to online publications or the online space. Generations of newspaper and television editors have been guilty of committing both these things. Yeah, I think this has been very valuable, your perspective and also Meena's perspective, because very often, when we talk about misinformation and disinformation, especially areas relating to caste blindness and blindness to India's linguistic diversity is a major challenge and a major point. Not just caste, Venkatesh. No, I mean, even religion. I understand. Yeah, no, even religion. I mean, religion, look at the reporting on Muslims. I mean, my goodness. If you just look at the reporting, okay, for example, there was this phase, right, of around 8-10 years where all you would see in the papers is terrorist arrested here, terrorist arrested there. Those are great examples, right, of both misinformation, disinformation. Your stupid reporters going and landing up in front of that
DCP who's giving him some kite flying stories, and this fellow is coming back and without any criticality, just putting that out, vomiting it out in the paper. Next day it appears saying, you know, like people like Praveen Swami and all that. Yeah, what were they doing in the Hindu? Right? You know, this I was in Karnataka, coastal Karnataka, reporting in those days. You know, I was working in the Hindu only, and he was going on writing about Bhatkal being this terror capital. You know, Bhatkal brothers, and there is so much color in that copy. Things like, you know, one day when he was 8 years old, he went to this shop and the shopkeeper gave him, in addition to what he was buying, he gave him a CD. In that CD, he saw the first video of Zakir Naik, that radical. I mean, like as though Mr. Swami was there, right? Now, where do you, in what category do you put that? Is it deliberate? You know, if you can say it's not, people like him, he's not, he's just an example. There were others also, Saikat Datta, you know, so many others were there, right? They would say that it is not disinformation, it is probably at most misinformation. I am innocent because this is information that came to me from RAW or from from the police or some, you know, special terror cell, right? So I don't know. I think I went off on a rant and a tangent over there. But what was the question? I think I've kind of lost sight of the question as well. But you did introduce something, Sudipto, which is a useful talking point. It was about newspapers versus online, right? Yeah, newspapers versus online. Yes, newspapers. yes. So tell me, yeah. So if you look at, I urge people over here who are listening, if you have the time, go into the archives of papers such as, starting with the Hindu, because the Hindu at that point really like covered itself in whatever. Okay. Between 2008 and 2012, 13, right? Just look at the reporting in these newspapers on quote unquote terror, right? Look at how, for example, Afzal Guru's case was reported. You know, I mean, what do you call that? Is it not fake news? Sources said. Who are these sources? Huh? Indeed. Absolutely, and well put, Sudipto. You know, I think I'll just comment on what you just said. In addition to what you said, I think someone asked a question about media literacy and critical digital literacy. And you made a point about how reporters also ought to look at their own perspectives and their own viewpoints from a critical thinking perspective and examine their own positionality from a critical perspective. I think that is a real missing piece, and it fits into the misinformation puzzle as well. And I believe that positionality is extremely important in today's reporting. To that extent, you know, it's controversial to bring in the reporter and make the reporter part of the story. But I think, especially in an era of low trust, it is probably important to make the reporter own up to being part of the story. You know, because then the audience is then aware that the reporting that they're receiving is colored through the perspective and the biases and the hidden biases or unconscious biases of the reporter themselves, which is, of course, a topic for another day. But the thing is, Sudipto, I think we can stop here. It's been It's a cataract. It's been a terrific. Pardon? It's a cataract, right? So, if you have a cataract, you know, an elephant can look like a big rock, no? Yeah, okay. So that's another framework, or not framework, analogy that you've given us that I'm going to puzzle over for a bit. But I'm going to close this conversation on that note, Sudipto. One thing I would like everybody in the audience is to know where they can find Sudipto's thinking and Meena's thinking. So Sudipto and Meena ji, could you please tell people where we can best find your thinking, whether it's your Twitter handle or whether it's your email or whether it is your reporting? Sudipto, you first and then Meena ji afterwards. Well, I mean, I don't write a lot now. I'm more behind the scenes, but yeah, a lot of my stuff is available in the Hindustan Times. I think that is the purple patch in my career where I really got a lot of backing from my editors to look at social realities, not just caste. You know, so a lot of my work in the Hindustan Times, I'm very proud of. A couple of pieces in Al Jazeera here and there. And yeah, I think despite, you know, all the other work in the News Minute, I mean, I've just produced around 3-4 pieces in the last couple of years that I've been with the Hindu, with the News Minute. If you can check them out, I'll be really grateful. Yeah.
These are the places you can look for my work. Okay, Meena ji, where is the best way to find you? I've also pasted Sudipto's Twitter handle. You can follow him there. मुझे I don't know. हाँ, बताइए. मैं ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया से लेती हूँ और मुझे लगता है कि वहीं से रियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं कहूँगी, जो मामले जिस तरह के मुद्दे हम लोग उठाते हैं तो वहाँ पे वो जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि वो मीडिया तो कवर करता नहीं है तो मीडिया से भी हम लोग लेते हैं। तो अभी हम लोग न्यूज़ मिनट को मैं फॉलो करती हूँ और न्यूज़ लॉन्ड्री है, वायर है, इधर का अल्टरनेटिव मीडिया है, उसको ज़्यादातर मुझे लगता है कि यहाँ से मुद्दे हमें मिल सकते हैं। बाकी मुझे लगता है सोशल मीडिया से हम लोगों को मुद्दे मिलते हैं, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में या टीवी में नहीं आती है, जो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे मिलती है। और कई बार जो है डायरेक्ट मामले कॉल भी करते हैं लोग, तो वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरह से हम लोग स्टोरीज़ जो है गैदर करते हैं। ठीक है. एंड आपका ट्विटर हैंडल भी मैंने पेस्ट किया है यहाँ. So on that note, Meena ji, thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. And Sudipto, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. With great Thank difficulty, you, and you sorry for all managed the to trouble. reach us. Yeah. And Meena ji, thank you for joining us. It has really been, I don't want to call it a master class because we didn't teach any workshop related skills, but it is a master class because we taught frameworks, or you taught frameworks, both of you, and ways to approach this topic of misinformation and disinformation. It's very valuable because it takes away the silo from the work that we do. And I hope all of you all learned as much from this conversation as I did. On that note, we'll close, but here's a reminder. Next week, we're going to be talking about trust, and we're going to bring you Dr. Masato Kajimoto. He's a professor at Hong Kong University and really the leading authority when it comes to trust. And like Sudipto specifically, he does not believe in the consensus view about trust. And what does that mean? For that, you'll have to log in next Thursday at 5 p.m. Indian Standard Time. At the same time, please don't forget to register. And please do remember, you've got to attend a minimum of 3 webinars in order to be able to qualify for the grant. On that note, thank you all very much. Sudipto, Meena ji, thank you once again. Thank Thank you. you. Thank you so much. Thank you. Thank you.